हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे MMRDA 2026 की जो रिक्रूटमेंट है डेप्यूटी अकाउंटेंट उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक 15 लिवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, डेप्यूटी अकाउंटेंट के लिए ऑल इन वन प्रोफेशनल नॉलेज की पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें टोटल 11 चैप्टर 12,500 प्लस एमसीक्यूज कवर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इक्विटी कैपिटल ओनली, सेकंड डेब्ट कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड वर्किंग कैपिटल एंड फोर रिटेन अर्निंग ओनली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डेब्ट कैपिटल in capital structure because financial leverage arise from use of fixed cost debt financing in capital structure. Next, second operating leverage arise due to presence of. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेकंड डेब्ट फाइनेंसिंग, थर्ड इक्विटी कैपिटल एंड फोर्थ डिविडेंड पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट fixed operating cost because operating leverage occur when the fixed operating cost exists in production. Next, third, a firm with high operating leverage will experience. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्मॉल चेंज इन प्रॉफिट विथ चेंज इन सेल्स, सेकंड लार्ज चेंज इन प्रॉफिट विथ चेंज इन सेल्स, थर्ड नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड फोर्थ कांस्टेंट प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड लार्ज चेंज इन प्रॉफिट विथ चेंज इन सेल्स बिकॉज high fixed cost make profit highly sensitive to sales changes. Next, fourth, financial leverage affect. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऑपरेटिंग इनकम, अर्निंग पर शेयर्स, सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट ओनली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड अर्निंग पर शेयर ईपीएस बिकॉज डेब्ट फाइनेंसिंग इन्फ्लुएंसेस ईपीएस ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट. Next, fifth, the combined effect of operating and financial leverage is known as. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टोटल लिवरेज, कैपिटल लिवरेज, मार्केट लिवरेज, इक्विटी लिवरेज। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट टोटल लिवरेज बिकॉज टोटल लिवरेज मीन्स ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज इम्पैक्ट. नेक्स्ट, सिक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉस्ट ऑफ परचेसिंग असेट, सेकंड मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर, थर्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड फोर्थ सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर. तो करेक्ट आंसर है सेकंड minimum return required by investor because cost of capital is the required rate of return expected by investor. Next, seven, the cost of equity capital is generally. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, सेकंड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट, थर्ड हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड जीरो. तो करेक्ट आंसर है थर्ड हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर बियर हायर रिस्क सो डिमांड हायर रिटर्न. नेक्स्ट, एट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टैक्स डिडक्टेबल, सेकंड नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ऑप्शनल एक्सपेंस एंड पेड ओनली आफ्टर टैक्स. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट टैक्स डिडक्टेबल बिकॉज इंटरेस्ट रिड्यूस टैक्सेबल इनकम गिविंग टैक्स एडवांटेज टू डेप्ट फाइनेंसिंग. नेक्स्ट, नाइन, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओनली, सेकंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट ओनली, third average cost of all resources of capital and market value of capital. तो करेक्ट आंसर है थर्ड average cost of all sources of capital because weightage average cost of capital is weightage average of cost of equity, debt and other sources. वैसे देखे MMRD के लिए जनरल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, टेंथ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्स सेंसिटिविटी ऑफ. तो देखो ऑप्शन है ईबीआईटी टू सेल्स, सेकंड ईपीएस टू ईबीआईटी, थर्ड सेल्स टू फिक्स कॉस्ट एंड फोर्थ प्रॉफिट टू कॉस्ट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड EPS to EBIT because DFL measure impact of EBIT changes on EPS. Next, 11, if company issue bond at 10% and tax rate is 30%, the after tax cost of debt is. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 10%, 8%, 7%, 6%. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर निकालना है तो 10% है तो 1 माइनस 30%. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे टैक्स शील्ड जो हो गया वो 7%. नेक्स्ट, 12,
इफ EBIT इंक्रीज while interest remain constant then EPS will. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, बिकम जीरो. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इंक्रीज, बिकॉज हायर EBIT आफ्टर इंटरेस्ट लीड टू हायर अर्निंग पर शेयर. नेक्स्ट 13, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस यूजुअली हैज द लोवेस्ट कॉस्ट. तो देखो ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डेप्ट कैपिटल, रिटेन अर्निंग. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, डेप्ट कैपिटल, बिकॉज डेप्ट इज चीपर ड्यू टू टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट 14, ऑपरेटिंग लिवरेज इज हाईएस्ट व्हेन. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, फिक्स कॉस्ट आर लो, सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट आर हाई, थर्ड सेल्स आर कांस्टेंट एंड फोर्थ फिक्स कॉस्ट आर हाई. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, फिक्स कॉस्ट आर हाई, बिकॉज हाई फिक्स कॉस्ट क्रिएट ग्रेटर ऑपरेटिंग लिवरेज इफेक्ट. नेक्स्ट 15, if company has no debts in its capital structure financial leverage will be. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, नेगेटिव. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, जीरो, बिकॉज फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन डेब्ट फाइनेंसिंग इज यूज्ड. नेक्स्ट 16, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज सिमिलर टू. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट. तो करेक्ट आंसर है सेकेंड, cost of equity, because retain earning belongs to shareholder, so opportunity cost equal equity cost. Next 17, if the cost of equity is 50% and cost of debt after tax is 7%, increasing debt proportion will. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इंक्रीज वर्किंग एवरेज कैपिटल कॉस्ट, देन वेटेज एवरेज कैपिटल कॉस्ट एंड देन keep WACC constant, decrease WACC and eliminate WACC. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, decrease weightage average cost of capital initially, because debt is cheaper than equity, so adding debt initially reduce working average cost capital until financial risk increase. Next 18, a company increase debt in capital structure financial leverage will. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, increase, decrease, remain same, become zero. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, increase, because more debt means higher financial leverage. Next 19, optimal capital structure is achieved when. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, cost of capital is maximum, second cost of capital is minimum, third equity is maximum and debt is zero. तो करेक्ट आंसर है सेकेंड, cost of capital is minimum, because firm aim to minimize weighted average cost of capital to maximize firm value. Next 20, combined leverage measure relationship between. तो देखो ऑप्शन है सेल्स एंड EPS, सेकेंड EBIT एंड EPS, थर्ड सेल्स एंड EBIT एंड फोर्थ प्रॉफिट एंड कॉस्ट. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेल्स एंड EPS, बिकॉज कंबाइंड लिवरेज मेजर इंपैक्ट ऑफ सेल्स चेंजेस ऑन EPS. वैसे देखिए डेप्यूटी अकाउंटेंट के लिए PDF अवेलेबल है, ऑल इन वन जनरल नॉलेज PDF अवेलेबल है, मराठी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, सभी PDFs अवेलेबल है. जिनको भी PDF चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF आप परचेज कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.